Do you know that more than 50% of commonly used antibiotics kill bacteria by attacking just one target, the bacterial cell wall? But there is the confusing part. Penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, glycopeptides all attack the cell wall, but each work at a different step. In today's video, we will compare every major cell wall inhibitors in the easiest way possible. Imagine bacteria is a water balloon. The peptidoglycan cell wall is like the strong outer wall protecting it. Without this wall, water enter, pressure increase, the bacteria burst and die. Human did not have peptidoglycan, that's why these antibiotics selectively kill bacteria. Before comparing antibiotics, understand how the bacteria synthesize or build their wall. बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और यूडीपी एनएजी. दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द एंजाइम मुर्रा ए. जो एंजाइम मुर्रा ए है वो कन्वर्ट करता है यूडीपी एनएजी को यूडीपी एन एसिटाइल मोरामिक एसिड और यूडीपी एनएएम. ये क्या है, ये सेकंड मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है बैक्टीरियल सेल वॉल का. तीसरे स्टेप में क्या होता है, द एंजाइम मुर्रा सी डी ई एंड एफ एड अमीनो एसिड 1/1 टू यूडीपी एनएएम. इससे क्या बनता है, पेंटापेप्टाइड साइड चेन. नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम मुर्रा वाई क्या करता है, ट्रांसफर करता है एनएएम पेंटापेप्टाइड को लिपिड कैरियर जिसको बोलते हैं बैक्टोप्रिनोल. ये एक लिपिड कैरियर है जो कि लिपिड 1 को बनाता है. फिफ्थ स्टेप में क्या है, जो नेक्स्ट एंजाइम है मुर्रा जी एड एन एनएजी मोलिक्यूल टू लिपिड 1. लिपिड 1 से लिपिड 2 बनाते हैं, उसमें एनएजी मोलिक्यूल ऐड किया जाता है जिससे कि आगे चेन बनेगी. The lipid carrier bactoprenol flip lipid 2 across the bacterial cell membrane to the outside surface. जो बैक्टोप्रिनोल है वो लिपिड 2 को बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड सरफेस पे फ्लिप करता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन. अब मेम्ब्रेन बन गई है तो मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड में है जो एंजाइम ट्रांसग्लाइकोजाइलेज है वो ज्वाइन करता है एनएजी एंड एनएएम यूनिट को ताकि आपस में एक लॉन्ग चेन बन सके. इसे ग्लाइकेन चेन बोलते हैं. फाइनली पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या करती है, और ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंक द पेप्टाइड साइड चेन. जो भी साइड चेन में पेप्टाइड होते हैं उनकी आपस में क्रॉस लिंक करके चेन बना देते हैं जिससे क्या है, मैश लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल फॉर्म होती है. एंजाइम की सेल वॉल सिंथेसिस के बाद हमें देखना है कि कौन कौन से जो सेल वॉल इनहिबिटर है वो कैसे कौन कौन से स्टेप पे काम करते हैं. Our first antibiotic is Fosfomycin. It acts at the earliest step. It block Murrah A enzyme. Without Murrah A, UDP-NAG cannot become UDP-NAM. No building material is formed. Now the building blocks are ready, but they must cross the bacterial membrane. A lipid carrier called bactoprenol transport them. Bacitracin block recycling of this carrier. No transport, no wall. Penicillin does not stop building block. Instead, it binds penicillin binding protein called PBPS. PBS are builders join bricks together. Penicillin lock the builder, cross-link stop and weak wall form. Bacteria burst. Cephalosporins work exactly like penicillins. Difference is they resist many beta-lactamase better. Each generation cover different bacteria. Generation 1 effective on gram-positive bacteria. Generation 2 on gram-negative. Generation 3 on broad spectrum. Generation 4 act on the Pseudomonas and Generation 5 on the MRSA. Carbapenem are the strongest beta-lactam. They bind penicillin binding protein with a very high affinity. Very broad spectrum reserved for severe infection. Monobactam like Aztreonam also bind PBS. It is effective against gram-negative and aerobic bacteria. It is safe in the penicillin allergy. Now comes a very different antibiotic. Vancomycin does not bind PBP. Instead, it binds directly to the D-alanine and D-alanine on the growing peptidoglycan chain. Imagine wrapping the brick with glue so builder cannot touch it. No cross-linking, no wall. Remember these cell wall inhibitors and their target steps.